हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर आवर नेक्स्ट सेशन इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आज के इस सेशन में बहुत बढ़िया मशीन के साथ शुरू करने वाले हैं एंड दैट मशीन इज ट्यूरिंग मशीन। दिस वाज द मशीन डेवलप्ड बाय एलन ट्यूरिंग, अ इंग्लिश मैथमेटिशियन इन 1936, and we have seen during the discussion of Chomsky's hierarchy that this particular machine is treated as universal machine। उसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं, बट इस वीडियो में टू एंटिटीज को टैकल करेंगे। ट्यूरिंग मशीन इज रिप्रेजेंटेड इन व्हाट वे, व्हाट आर द एडिशनल कैपेसिटीज दैट आर प्रेजेंट इनटू इट, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, एंड फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसका डेल्टा, इसके टपल्स कैसे यूज करते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। So let's begin with first a very famous entity, that is discussion about Chomsky's hierarchy and Turing machine के एक बार वापस कैपेबिलिटीज देख लेते हैं। So this is the well-known diagram that we have seen many times. Now if we look towards this Chomsky's hierarchy, अपने जो type 0 का language है, that is the outermost circle, and the innermost circle is type 3, that is रेगुलर लैंग्वेज। सो सबसे पहले यूनिट में हम लोगों ने शुरू किया फाइनाइट ऑटोमाटा के साथ, उसके बाद आया रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके बाद पंपिंग लेमा ने हमको कहा कि कुछ लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर, तो हम लोग गए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के साथ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर स्टडी किया, उसका एक्सेप्टर देखा पीडीए। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव linear bounded automata in our syllabus, right? So we go ahead with what? Turing machine. And अगर आप Turing machine के capacities देखते हो, तो this machine is able to accept regular language, context free language, context sensitive language, recursive language, and recursively enumerable language. So this particular machine is treated as universal machine. तो इसने, मतलब there are certain drawbacks of FA, those are recovered into PDA. There are certain drawbacks of the PDS, those are recovered by LBA. There are certain drawbacks of LBA which are recovered in TM. तो देखते हैं कि TM में ऐसे क्या facilities है, and that's why it is so popular and so nicely used and treated as what? Universal machine. So let's move into the representation as well as properties of this Turing machine. So as I mentioned, this particular machine is developed by Alan Turing in 1936. Alan Turing in 1936, right? And this machine has put forward the notion of general computation or general computing, right? So in this case, what are the different possibilities or addition that has been done with basic machine, that is finite automata? तो हम लोगों ने finite automata कैसे डिस्कस किया है? Finite automata was having this as an input tape. This particular input tape is bounded at this side, right? This input tape is divided in such a way that each block will have one input symbol. Then यहाँ पे था read head. Read head is having the capacity of reading only, and then control is given to finite state control system. And यहाँ पे machine is in the state, it reads the symbol, it moves to next state. It is in the state, it reads the symbol, it moves to next state. And जब पूरा string खत्म होता है, if we are there in final state, then we can say that this particular string is accepted. So this was all about discussion of finite automata. But इसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स है। इसके लिए मेमोरी जो था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरी लिमिटेड मेमोरी एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट। सो ये काउंटिंग नहीं कर पाता था, पैलिंड्रोम को चेक नहीं कर पाता था। लॉट मेनी इश्यूज वेयर देयर विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट ऑटोमाटा, राइट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेमोरी। फिर हम लोग आए पीडीए में एंड पुश डाउन ऑटोमाटा में वी हैव सम एडिशनल मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, राइट, ओके। फिर हम लोगों ने देखा पोस्ट मशीन। पोस्ट मशीन में इसी इनपुट टेप को क्यू के रूप में देखा गया एंड इट वाज यूजिंग
first in first out strategy, where the PDA was using last in first out strategy, like that, right? Okay, but now in all these things there are certain drawbacks which are recovered by Turing machine. तो क्या क्या changes हुए ध्यान से देखना है, right? The first changes that has been done with the input tape, and that is now in Turing machine the input tape is considered as unlimited tape, right? Which is not bounded at any end. मतलब इस end में भी free है, इस end में भी free है, right? That is the first change, right? Next to that, this tape is divided into the blocks such that each block will hold only one input symbol at a time. वो property तो उसका कायम है, right? Next to that, यहाँ पे if I am putting the input symbols, let us say 0, 1, 0, 1, 0, 1. These are my input symbol. Rest of the जो blocks है इस tape के, those are filled up with a very special symbol known as bounding symbol और ब्लैंक सिंबल. कुछ बुक्स में इसको ब्लैंक सिंबल भी कहा है, बट विल बी कॉलिंग इट एज बाउंडिंग सिंबल, राइट? ओके, तो इन दो बाउंडिंग सिंबल के बीच में अपना क्या है, इनपुट स्ट्रिंग है, राइट? जब भी ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट होगा तो ट्यूरिंग मशीन का ये जो हेड है, that particular head is now modified and it is known as read write head. read write head मतलब ये रीडिंग का पॉसिबिलिटी तो है ही इसके पास, एज वेल एज दिस हेड कैन बी एबल टू राइट सम डेटा इनटू व्हाट, इनपुट टेप, राइट? जहां पे वो पॉइंट कर रहा है, जहां पे वो पोजीशनड है, उस लोकेशन पे वो डेटा राइट भी कर सकता है, वो डेटा रीड भी कर सकता है, राइट? ओके, एंड देन वी हैव दिस ब्लॉक इज कांस्टेंट, दैट इज this is also a state machine, so let's say Q0, let's say Q1, Q2, and this is known as finite state control. State control, right? One more modification you will find into this particular read write head can be able to read as well as write. वो तो हमने देख लिया पहले वाले सारे मशीन में. ये जो हेड था, that is having the capacity of moving towards the right side only by one block, that's it, right? पर ये जो read write head है, that can move either in forward directions or in backward direction, or can decided to stay at the same position, right? ओके, सो ये बहुत फ्लेक्सिबल मशीन है. पहले तो इसने मेमोरी के लिमिटेशंस को ही निकाल दिया. सो इनपुट टेप इज कंसिडर्ड एज अनलिमिटेड मेमोरी, which I said earlier also has lead towards the concept of development of general computing. and probably आगे जाके वन न्यूमन आर्किटेक्चर में भी आपने देखा होगा कि programmer has to store his programs in the memory and processor has to perform fetch, decode and execute. So प्रोसेसर ने भी एग्जीक्यूशन करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो किस पे लिखता है, इसी मेमोरी पे लिखता है, राइट? सो आई मीन टू से दैट दिस पर्टिकुलर मशीन हैज गिवन द जनरेशन टू द जनरल कंप्यूटिंग सिस्टम. अनलिमिटेड मेमोरी अभी आज के डेट में कहां पे देखते हैं हम लोग कंप्यूटर में? यस, वी हैव सीन दैट इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट, राइट? वर्चुअली अनलिमिटेड मेमोरी इज अवेलेबल टू अस, ऐसे हम लोग कहते हैं, राइट? सो द सेम कॉन्सेप्ट इज डिवाइस्ड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1936 एंड दैट कॉन्सेप्ट इज पुट फॉरवर्ड एंड प्रोपोगेटेड इन nowadays in the computing system. Anyway, तो इसका प्रॉपर्टीज देखो. टेप इज अनलिमिटेड, राइट? Tape is filled up with all the symbols B, B, B and known as what? Bounding symbol or blank symbol. They can be represented with lowercase b or we can represent it with uppercase B also. Most prominent notation is uppercase B because जब भी हम लोग यहाँ पे input symbol रखते हैं तो lowercase b can be one of the our input symbol, right? तो उससे confusion को हटाने के लिए we'll be using uppercase B as a bounding symbol or blank symbol, right? Next modification वापस बता रहा हूं, instead of just a read head it becomes a read write head and this head can move in both the direction, forward as well as backward, as well as this can we as a designer can decide to stay it at what same position, right? पर यहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं था रीड हेड पे. इट इज एबल टू रीड ओनली वन सिंबल, मूव्स अहेड, रीड वन सिंबल, मूव्स अहेड, राइट? ओके, दैट्स इट. सो यहाँ पे we can take it ahead, we can take it back, we can ask it to stay there, and this is finite state control.
So this is what can be treated as a block diagram of a Turing machine, right? तो फिर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? So इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा that is done with the help of, again I can say 7 tuple machine, क्योंकि ये finite automata में ही addition हो चुका है, right? So first symbol is Q, right? Next one is sigma, next one is again tau, next one is delta, next one is Q0, next one is F, and next one is capital B, right? Okay. Abhi, as this is the machine that we are discussing, almost each and every symbolic notation or tuple ka description आप खुद दे सकते हो, right? So where Q is, you can help me out. Q is what? Finite set of states, right? State machine है तो finite number of states चाहिए, right? Okay. So next is sigma is input alphabet. So I can say finite set of input alphabets. Right. Okay. यहाँ पे tau is a finite set of or a set of tape symbols. Tape पे कौन-कौन से symbols रहेंगे? वो, right? So can I say that tape के ऊपर अभी input symbol तो रहने ही वाले हैं, उसके साथ रहेगा बाउंडिंग सिंबल, उसके साथ और जो कुछ पॉसिबल सिंबल्स है वो सारे के सारे उधर रह सकते हैं, एप्सिलॉन रह सकता है, एन नंबर ऑफ पॉसिबल सिंबल, जो प्रॉब्लम में हम लोग देखने वाले हैं कैसे कैसे करेंगे, राइट? सो ऑल पॉसिबिलिटी सिंबल्स कैन बी स्टेइंग ऑन व्हाट? टेप. सो वी कैन ऑलवेज सेज दैट दिस इनपुट अल्फाबेट इज अ सबसेट ऑफ, आई कैन से लाइक tape symbols. Yes. Then we have Q0. Q0 is what? Q0 is a start state or initial state, right? And this Q0 is always belonging to what? Number of states. Then we have F, that is final state. इस केस में final state को कहेंगे halt state, right? Okay. आगे जाके ट्यूरिंग मशीन में एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं, halting problem of Turing machine. वो भी एक very famous entity है. So that is a halt state, right? Okay. So final state can be a subset of what? Q. And last one is B, is known as bounding or blank symbol. Blank. Blank symbol on the tape, right? Okay. So these are the 6 tuples and सबसे ज्यादा डिस्कशन होने वाला है अभी किसका? डेल्टा का. दैट इज द हार्ट ऑफ द मशीन. तो ये थोड़ा अलग ही दिखने वाला है. सो प्लीज ऑब्जर्व, वेरी इंटरेस्टिंग वन टू ऑब्जर्व द डेल्टा ऑफ, यू कैन से लाइक ट्यूरिंग मशीन, राइट? ओके. तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, right? So 6 tuples I mentioned marked here, and rest of the, that is delta, I'll be marking over here, right? So delta is अपना state transition function, right? Okay. तो कैसे लिखते हैं? Please observe. Machine is in present state, no doubt, right? It reads the symbol, right? Okay. So symbol read from the tape, right? Okay. And then it decides to do 3 different operations. So please see what are these 3 different operations. So it is going to decide like what will be the next state. That is why it is a state machine. Present state में input symbol जो read किया उसके ऊपर decide करेगा next state कहाँ पे जाना है. Next to that, symbol to write on tape. कौन सा सिंबल टेप पे राइट करेगा वो भी डिसाइड करेगा. एंड लास्ट वन इज हेड मूवमेंट, राइट? एंड हेड मूवमेंट क्या करेगा? दैट इज पॉसिबल हेड मूवमेंट्स आर लाइक लेफ्ट, राइट और नो मूवमेंट, राइट? एक तो लेफ्ट को मूव करेगा या राइट को मूव करेगा, या नो मूवमेंट मतलब रीड राइट हेड वहीं पे रहेगा जहां पे ऑलरेडी है, राइट? सो इन दिस केस we can always see something else. अभी इसके RHS में ट्रिपलेट दिख रहा है, देखो
and LHS में pair है. For example, if I say that delta Q0 and B, and if I say that it gives me Q1 A and I'm saying L. So what it indicates? What it indicates? So it indicates that machine is in present state Q0. It takes out the symbol, reads the symbol as B. Then machine moves to Q1. उस जगह पे उसने A को राइट कर दिया and machine का head is moved towards left side. This is how you can decide the configuration of a Turing machine, right? Please see, हमेशा इसके डेल्टा में LHS में आपको दिखेगा पेयर, RHS में दिखेगा आपको ट्रिपलेट, राइट? एंड इस मशीन का एक खासियत है, यहां पे बता दूं, राइट? इसने एक सिंबल रीड कर दिया, मतलब वो सिंबल उसने निकाल दिया एंड उस जगह पे उसको सिंबल लिखना ही है, कंपल्शन है, राइट? चाहे आप सेम सिंबल लिख दो, चाहे अलग सिंबल लिख दो, एंड देन जैसे सिंबल लिखेगा एंड फिर हेड का मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट या नो पोजीशन और नो मूवमेंट की तरफ जाएगा, राइट? ओके, सो मशीन इज टेकिंग आउट द सिंबल, मशीन इज पुटिंग द सिंबल बैक, चाहे वो सेम सिंबल हो या अलग सिंबल हो, राइट? ओके, सो वेरियस डेल्टास को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई मेंशन delta of I am in Q0 A produces Q1 A R. What it indicates? Machine is in present state Q0. It takes out the symbol, matlab reads the symbol A. It transits to Q1, writes symbol A back onto the same position and moves the head towards right. Right? Okay. Next to that, delta Q1. I'm reading B and I'm saying stay in Q1. Star and left. So what it says, machine is in Q1, it reads the symbol as B, machine stays in same state, that is Q1, B की जगह पे राइट कर दिया उसने स्टार को and head is moved towards left. Please see sequence, machine remains in same state, B की जगह पे राइट कर दिया स्टार को and machine moves towards left, right? Okay, अभी delta of, let us say I am in Q2, I am reading A and here it goes to Q0, right? A is written back, right? So machine is in Q2, it reads the symbol A, right? Machine transit to Q0, A की जगह पे वापस A लिख दिया and head is not moved anywhere. So head के position एक तो right को जा सकता है, left को जा सकता है and no movement को आ सकता है, right? Okay, so as a designer we are going to design it in such a way that अपना next state क्या होगा, कौन सा सिंबल उस जगह पे राइट करना है जिस जगह से रीड किया था एंड देन हेड का मूवमेंट को हमको डिसाइड करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. तो हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगेंस्ट ट्यूरिंग मशीन वो बहुत ग्रेजुअल वे से करेंगे, राइट? पहले तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो डेफिनेटली रेगुलर लैंग्वेज के होंगे, जहां पे हमको बैक ट्रैकिंग का जरूरत नहीं, मतलब हेड विल नेवर मूव टुवर्ड्स व्हाट, लेफ्ट साइड. कुछ प्रॉब्लम्स पहले देखेंगे जहां पे अलग सिंबल से रिप्लेसमेंट का भी जरूरत नहीं. ऐसे करके ग्रेजुअली विल बी कॉन्फिडेंट इनटू द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन. इन ऑल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन एंड आप देखोगे उसका कैपेबिलिटी कितना अमेजिंग है, कितना ह्यूज है. एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इट कैन बी एबल टू टैकल विद, राइट? सो दिस इज व्हाट the Turing machine representation with 7 tuple. I hope कि ये 7 tuple अभी बहुत easily आपको समझ में आए होंगे. नए 2 tuples इसमें आ गए जो symbolic notation नया नहीं है, पर this is identified as a finite set of tape symbols and this B as a new symbol, that is what bounding symbol or a blank symbol that is present on the tape, right? जब भी हम लोग इस मशीन को शुरू करेंगे तो प्लीज सी मशीन का रीड राइट हेड, एक बार फिर से बता रहा हूं, मशीन का रीड राइट हेड इज ऑलवेज पोजीशन आफ्टर द लेफ्ट मोस्ट बाउंडिंग सिंबल. तो यहां पे लिखता हूं व्हेन मशीन स्टार्ट्स, व्हेन मशीन इज अबाउट टू स्टार्ट read write head is positioned at or after, you can say position after
after leftmost bounding symbol. Leftmost bounding symbol. Leftmost bounding symbol. Right? Okay. So if the machine is about to start, मतलब मशीन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब वो स्टार्ट होगा तो उस समय ये जो रीड राइट हेड होगा वो हमेशा लेफ्टमोस्ट बाउंडिंग सिंबल के बाद वाले फर्स्ट इनपुट अल्फाबेट के ऊपर पोजीशन होगा. दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूरिंग मशीन, राइट. एंड इसी को यूज करेंगे हर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजिक वे. एंड इसमें ऑब्वियसली जो हमने पोस्ट मशीन के लिए किया, पीडीए के लिए किया, फाइनाइट ऑटोमाटा के लिए किया, वही पर थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे पहले करेंगे हैंड रन जैसे पोस्ट मशीन में किया, उसके बाद लिखेंगे डेल्टा, उसके बाद होगा टेबल, उसके बाद होगा स्टेट डायग्राम. यस, सो दिस इज व्हाट ट्यूरिंग मशीन इज, एंड these are its 7 tuples and its heart of the machine, where LHS you will find a pair, RHS you will find triplet. जहां पे RHS आपको कह रहा है कौन से नेक्स्ट स्टेट में जाना है, उस जगह पे कौन सा सिंबल लिखना है, एंड फिर रीड राइट हेड को किधर मूव करना है, राइट. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. इसमें हम लोगों ने ट्यूरिंग मशीन के प्रॉपर्टीज देखे, ट्यूरिंग मशीन का रिप्रेजेंटेशन देखा, एंड अगले सेशन में मिलते हैं विद फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, जहां पे बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग वे से हम लोग प्रॉब्लम को टैकल करेंगे. दैट्स इट फॉर दिस सेशन. कीप स्टडिंग, कीप प्रॉब्लम सॉल्विंग. Thanks for the watching. Thank you very much.